It was a long time ago since I went on a bike ride, and just for that reason, I was very excited about this one. My excitement level just got doubled as we started our day early. But it didn't last for very long. As the nature had some of the plants. As we continued to cruise towards the outskirts of the city, the rain went from mild showers to a heavy downpour. फर्स्ट ब्रेक लिया है हमने. वी आर एट पनवेल राइट नाउ एंड यहाँ पे बहुत बाइकर्स भी है आज. बट आई थिंक एक प्लान चेंज ऑफ प्लान होने वाला है, बिकॉज जहाँ हम जाने वाले थे, जो जगह सोच के निकले थे, वो फ़िलहाल क्लोज्ड है. बिकॉज पास के कुछ दिनों में वहाँ पे बहुत इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, तो वहाँ नहीं जाएंगे. अभी लेट्स सी कहाँ का डिसाइड होता है. जो जहाँ पे भी होगा आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. फ़िलहाल तो हमने चाय वाय पी ली है, थोड़ा सा एक वड़ा पाव खा लिया, भूख लग रही थी यार. एंड आज मैं अकेला नहीं आया हूँ. आज आई हैव कम विथ माय फ्रेंड. ये आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा. बिकॉज बारिश है तो मतलब नहीं है लगा कि जो मेरा कैमरा है उसी से रिकॉर्ड हो रहा है. आज मैं मेरे फ्रेंड रोशन मेरे सोसाइटी में रहता है, उसके साथ राइड कर रहा हूँ. एंड उसके ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ आज. सो आई एम नॉट राइडिंग अलोन टुडे. मज़ा आ रहा है, काफ़ी रुकते रुकते जा रहे हैं. इट इज़ आई थिंक टाइम क्या हो रहा है अभी? इट इज़ 7 AM इन द मॉर्निंग. एंड आगे का जो भी प्लान होगा आई कीप यू अपडेटेड. बहुत बारिश है यार आज, बहुत ज़्यादा बारिश है. सी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने जो शॉट्स देखे उसमें तो एकदम फॉग था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था. एंड पूरा ऊपर से लेके, भले कितना भी रेनकोट पहना हो, कुछ भी पहना हो, पूरा ऊपर से लेके अंदर तक सब कुछ गीला हो गया. एंड आई कैन से दैट दिस इज़ अ वेट राइड, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. सी यू. After my lame joke session, we changed our destination for the day and decided to go to the Malsej Ghat instead. But it was at this point when I decided to not to move ahead in this ride with my pals and go back to home, because my boots were filled with water and my feet were soaked in the filth which was mixed in this water. And this was a sudden shift in my mood, which went from all excitement and joy to getting irritated from all the squishiness I felt inside my boot.
But not all was lost when I decided to go home. As I still got to enjoy riding in the rain. As I passed through the streets of Hollyland. The beautiful Airoli Bridge. The empty streets of Powai, which, by the way, is a very rare sight on any regular day. And last but not the least, our beloved RA forest. And at the end, I was still able to complete a roundabout of almost 130 kilometers. Wow, that was one heck of a ride, and I enjoyed every bit of it. And let me know in the comment box if you enjoyed watching it too. Well, anyways, that was all for this video. If you liked the video and enjoyed watching it, do hit the like button for the algorithm. And if you are new to the channel, please also subscribe and support the growth. I'll see you very soon in the next video. Till then, goodbye, take care, stay safe and stay tuned.